Hello friends, myself Abhishek Mishra and I welcome you to Drishti IAS UPPCS Mains course, and in this mains course I'll be taking your international relations classes. So in this short video I'll be telling you about the course and also what all we'll be covering in international relations. So let us begin. Now let me just take you through the salient features of the course. So this will be a live online course and it will be available to you through the Drishti Learning App. Now with this you will also get access online to the Drishti test series for UPPCS, and there will be in total 175 plus hours of classes. Now the course validity will be for 1 year from the date of commencement of the batch, and you will also have the facility to watch each class unlimited number of times during the validity period, which is 1 year from the date of commencement of the batch. Now while designing this course, our experts have taken into account the changing trend of UPPCS and have made the course structured it in a way that it is helpful for you to clear the mains exam. Now the course will comprehensively cover the entire syllabus, including the newly introduced UP specific general studies papers 5 and 6. Now the online test series, as I already told you, it will be available to you through the Drishti Learning App free of cost. Also there will be regular interactive doubt clearing sessions with the faculties of different subjects who will be taking your classes. For example, for international relations, I'll be your go-to faculty and I'll be taking your doubt sessions. Now let us look at the syllabus of international relations, which will be taken care of by me in this particular course. So the UPPCS General Studies Paper 2 syllabus, where international relations questions are asked, basically it gives us an idea about what all areas we need to cover. Now there's a difference between the preparation for prelims and the preparation for mains. In prelims we have to exhaustively study, like we have to throw our net wide, because the questions can be asked from various areas. But in case of mains in UPPCS, generally in international relations, the current oriented topics are more often asked by the UPPCS. So we'll be focusing intensively on those areas from where questions are likely to be asked. Now if you look at the syllabus, so it tells that India and its relationship with neighboring countries is an important area. Also the bilateral, regional and global groupings and agreements involving India and or affecting India's interest. Effect of policies and politics of developed and developing countries on India's interest. Also Indian diaspora. Okay. Then we have important international institutions, agencies, their structure, mandate and functioning, and also current affairs of international importance. For example, we have recently had this civil war like situation developing in Sudan, and then India has also done an operation to rescue its citizens from Sudan, which is Operation 𝐃𝐫𝐢𝐬𝐡𝐭𝐢. Right. So in mains a question can be asked about what is Indian government's policy regarding evacuation of its nationals during any such emergency situation. Why we are not having a policy in place? Why it is always a knee-jerk reaction? We have done well. A lot of operations have been conducted in the past so many years, and Indian citizens have been evacuated from places of conflict. A recent case being Operation Ganga during the Ukraine crisis. But still we are not having a full-fledged policy for evacuation of our citizens during any such conflict. So maybe such a question can be asked by UPPCS. So we will be covering such questions as well. Now just to make it little better to understand that what all areas we will be covering and how we will be covering, so we can look at this diagram and try to understand.
See, when we talk about international relations, then we are covering basically the relationship between India and its neighboring countries, between India and the major powers, and India and important countries which have become important because of maybe some high level visit. For example, Egypt this year has become important because the president of Egypt, LCC, was invited as chief guest for the Republic Day parade, and India has also invited Egypt as a guest country during the G20 summit which it is hosting. So India-Egypt relations become important for this year. So we'll look at relationship which is important perennially, that is all time important, and relations which become important because of some high level visit, for example Egypt. तो इन सारी चीज़ों को भी हम लोग देखेंगे. Now in international relations, an important area for us to cover would be the relations with the neighboring countries. So let us look at what we'll be covering when we talk about the neighboring countries. तो जब हम neighboring countries की बात करते हैं तो we need to see that India's relations with our neighbors and with those neighbors which have been in news. So India-China relations always very important. So we'll be covering that, and in that we'll be focusing on the border issue, the recent renaming of places in Arunachal Pradesh by China, right, which was a provocative act by China. Then what is the origin of the border issue between India and China? So all of that we'll be covering. Recently India is also going to surpass China in population. So how does it impact India-China relationship? So that is also important. And obviously the trade issues where India continues to have a big trade deficit with China. तो उसको हमें कैसे टैकल करना है, तो इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे कि हमारा मिलिट्री चैलेंज क्या है चाइना से, हमारा इकोनॉमिक चैलेंज क्या है चाइना से, एंड व्हाट शुड बी आवर अप्रोच इन डीलिंग विथ चाइना, और कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इंडिया चाइना रिलेशंस में स्ट्रेन आ रहा है. फॉर एग्जांपल आवर क्लोज टाइज विथ यूएस, that is also a factor in the India-China relations. After this, we'll also be looking at our neighbor Pakistan. So Pakistan, as the Foreign Minister of Pakistan himself has said, that it is in the middle of a perfect storm. और ये perfect storm या तूफान ऐसा है जहाँ they are facing an economic crisis, very deep economic crisis, very turbulent political crisis, right? There's a tussle going on between the executive and the judiciary, then the Imran Khan versus the Pakistan army, right? तो बहुत सारी चीज़ें इसमें मिली हुई हैं, तो पाकिस्तान becomes important. But from exam point of view, we'll also be looking at the Indus Waters Treaty. तो ये जो Indus Waters Treaty है, ये 1960 की ट्रीटी है, और इसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा जो कंट्रोवर्सी रही है हाल फिलहाल में. इंडिया हैज़ आस्क्ड फॉर द रिव्यू ऑफ द ट्रीटी. तो क्या इसके फीचर्स हैं और किस वजह से इंडिया इज़ डिमांडिंग अ रिव्यू ऑफ द ट्रीटी. देन पाकिस्तान हैज़ गॉटन आउट ऑफ द FATF grey list, but still it continues to harbor terrorist elements and giving sanctuary to many such terrorists and terrorist outfits. तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इंडिया पाकिस्तान के बीच में हमेशा एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है. द इशू ऑफ कश्मीर इज ऑल्सो देयर. तो ऑल ऑफ दिस विल बी सीइंग बिकॉज ऑल ऑफ दिस इज इम्पॉर्टेंट. देन वी कम टू अनदर नेबर ऑफ इंडिया विच इज़ भूटान. भूटान इज़ इंडियाज बेस्ट फ्रेंड इन द नेबरहुड. लेकिन अभी हाल ही में जो एक चीज़ हुई है विच हैज़ बीन इन न्यूज़ अ लॉट, दैट इज़ दैट भूटान एंड चाइना हैव बीन डिस्कसिंग about their border issues and its resolution. तो वो कहीं ना कहीं जो चाइना फैक्टर इसमें है, that becomes a challenge for India.
तो उसको भी देखेंगे कि व्हाट इज़ द इशू, border issue between Bhutan and China, and what China has offered to Bhutan, and what are India's concerns regarding that. Then after that, India's relations with Bangladesh become important because Bangladesh is India's biggest trading partner in South Asia, और बांग्लादेश के साथ भी इंडिया के वाटर इश्यूज, ट्रेड इश्यूज, इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज जुड़े हुए हैं. तो इन सारी वजहों से बांग्लादेश के साथ रिलेशंस आल्सो बिकम इम्पॉर्टेंट. नेपाल again facing lot of political turbulence in recent times, and India-Nepal relations has been a favorite area of the UPPCS paper setter also. तो जैसे कि जब मैं पेपर आपसे डिस्कस करूंगा तो आई विल शो यू दैट हाउ नेपाल हैज़ बीन आस्क्ड मल्टीपल टाइम्स विद द UPPCS इन रिसेंट ईयर्स. तो नेपाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहां हम देखेंगे व्हाट आर द इश्यूज बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, कहाँ एरियाज ऑफ कॉपरेशन है, कहाँ एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट या कंसर्न है, एंड व्हाट इज द चाइना फैक्टर इन द रिलेशनशिप. राइट. श्रीलंका हैज़ बीन इन न्यूज़ अ लॉट बिकॉज ऑफ द सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस. तो श्रीलंका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है. यहाँ का तमिल इशू भी समझेंगे कि व्हाट आर द डायनेमिक्स इन्वॉल्व, व्हाई इंडिया इज अ पार्टी टू दैट इशू, एंड सो ऑन. Then Myanmar, the military continues to rule in Myanmar, and how that affects India's democratic credentials when India is having relationship with the military government there, while India is promoting democracy or talking about the virtues of democracy, और neighborhood में coup हो जाता है और उसके बाद जो डेमोक्रेटिक एक्टिविस्ट इंडिया से सपोर्ट की आशा कर रहे हैं उनको वो सपोर्ट नहीं मिलता है. तो हाउ डज इट इम्पैक्ट अवर डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स, एंड व्हाट इज़ द चाइना फैक्टर, व्हाई वी आर डूइंग व्हाट वी आर डूइंग इन म्यांमार. तो इन सारे इश्यूज़ को भी हम देखेंगे. मालदीव्स के साथ भी हमारे रिलेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, सिग्निफिकेंट हैं. तो इसको भी देखेंगे कि मालदीव्स इज़ द ओनली कंट्री इन द नेबरहुड विच फॉलोज ए इंडिया फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी. वी हैव अ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी एंड मालदीव्स हैज़ अ इंडिया फर्स्ट पॉलिसी. तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट नेबर है. फिर अफगानिस्तान में जो रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है आफ्टर द टेक ओवर बाय तालिबान, तो व्हाट डज इट हैज़ इन स्टोर फॉर इंडिया. इंडिया उसको कैसे देख रहा है, एंड व्हाट इज़ इंडिया वांटिंग टू डू स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू तालिबान, whether India should recognize Taliban or not, so that becomes an important issue. तो उसमें जो भी पॉइंट्स हम अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो what points we can write, ये सारी चीज़ों को हम यहाँ डिस्कस करेंगे. तो ये तो हो गया एक ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग इन द नेबरिंग रिलेशंस और नेबरहुड रिलेशंस इन द क्लासेस. आफ्टर दैट वी कम टू द नेक्स्ट important area of our mains classes, that will be India's bilateral relations, important bilateral relations. तो यहाँ definitely India US relations, India Russia relations, ये काफ़ी important हो जाता है. इसके बाद India EU relations also become very important. Then India's relation with Japan always important, इसको भी हम देखेंगे. फिर सेंट्रल एशिया में भी इंडिया काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहा है, तो इंडिया सेंट्रल एशिया रिलेशंस, इसको भी देखना है. वेस्ट एशिया इज़ ऑल्सो आवर एक्सटेंडेड नेबरहुड एज इज सेंट्रल एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया. तो दैट मेक्स इंडिया आसियान रिलेशंस, इंडियाज रिलेशंस विद UAE एंड सऊदी अरेबिया इन वेस्ट एशिया, एंड ऑल्सो हियर विल एड इंडियाज रिलेशंस विद ईरान एज वेल, राइट. इंडिया इजराइल रिलेशंस. तो ये सारे रिलेशंस को हमें यहाँ देखना है, बायलैटरल रिलेशंस को. और डेफिनेटली इस बार के लिए एग्जाम के लिए व्हाट बिकम्स इम्पॉर्टेंट इज इंडिया इजिप्ट रिलेशंस ऑल्सो, ओनली बिकॉज इजिप्ट को हमने इनवाइट भी किया है. इजिप्ट के साथ हमारे लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशंस हैं. हिस्टोरिकली वी गो बैक अ लॉन्ग टाइम बैक, एंड वी वेर द को फाउंडर्स ऑफ द नॉन अलाइन मूवमेंट NAM. तो ये सारी चीज़ों की वजह से इजिप्ट के साथ हमारे रिलेशंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस बार के एग्जाम के लिए. So we'll also look at India-Egypt relations, right?
आफ्टर दिस व्हेन वी कम टू रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट्स, तो यहाँ जो कुछ ग्रुपिंग्स हैं उनको हम ध्यान से देखेंगे. फॉर एग्जांपल सार्क एंड बिम्स्टेक, G20 and India's presidency becomes very important because India is host of G20. तो यहाँ क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, तो विल कवर इट फ्रॉम मल्टीपल डायमेंशंस कि इंडिया का प्रेसिडेंसी में एजेंडा क्या है, what are the challenges, what are the opportunities for India. So all of this we'll see. Then India is also hosting another important summit, that is of SCO. तो SCO में इंडिया का होना, साथ ही साथ इंडिया का क्वाड में होना, तो ये लगता है कि they are counter to each other. So how India is balancing it, and what are India's reasons for being in both the groupings. So all of this we'll discuss. Then groupings like ITU2, non-aligned movement, the Indo-Pacific Economic Framework launched by US, of which India is a part, the G7, India is being regularly invited for the G7 summits, right? तो G7 की क्या importance है, how it compares with G20 now, and जो इंडिया को रेगुलरली इन्वाइट किया जा रहा है, तो व्हाट इज इंडियाज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू G7. देन सम इम्पॉर्टेंट एनवायरमेंटल मीटिंग्स ऑल्सो, दैट बिकम्स इम्पॉर्टेंट बिकॉज एनवायरमेंट इज ऑल्सो एन IR टॉपिक दीज डेज, राइट. तो वो एक ओवरलैपिंग एरिया है बिटवीन एनवायरमेंट एंड IR. तो हम इसमें जो IR का डायमेंशन है उसको कवर करेंगे. COP27, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27, विच हैपेंड इन इजिप्ट. तो इजिप्ट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर दिस रीजन. द लॉस एंड डैमेज फंड जो कि यहाँ से निकल के आया. दैन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15 विच वॉज अबाउट द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, उसकी COP थी. और इससे जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क निकल के आया, तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट. तो ये एक इंडिकेटिव लिस्ट है, तो इसके साथ और भी कुछ टॉपिक्स रहेंगे, उनको भी डिस्कस किया जाएगा इन क्लास. इसके बाद आते हैं अबाउट इंडियन डायस्पोरा, राइट. तो डायस्पोरा क्या है? डायस्पोरा आर द पीपल हु ट्रेस देयर एंसेस्ट्री टू इंडिया, राइट. दे और देयर एंसेस्टर्स वेर पार्ट ऑफ इंडिया, बट नाउ दे आर सिटीजन्स ऑफ सम अदर कंट्री. एंड इंडिया हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डायस्पोरा, बिगेस्ट डायस्पोरा. एंड इंडियन डायस्पोरा इज ऑल्सो वेरी पावरफुल. कई जगहों पे इन मैनी कंट्रीज दे आर हैविंग a very powerful existence. For example, in US, Indian diaspora is very wealthy, very resourceful, right. Even in Western European countries, Indian diaspora is in a strong position. But in some other parts of the world, the Indian diaspora is also facing a lot of challenges. For example, in Fiji, for example, in Sri Lanka, right, in Myanmar. तो ऐसे भी कई प्लेसेस हैं जहाँ की इंडियन डायस्पोरा हैज़ फेस चैलेंजेस. तो विल ऑल्सो सी कि डायस्पोरा के क्या इश्यूज़ हैं, हाउ दीज इश्यूज़ आर डिफरेंट अक्रॉस डिफरेंट जोग्राफीज. ऑल ऑफ दिस विल सी. इंडियन गवर्नमेंट्स प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स फॉर इंडियन डायस्पोरा टू कनेक्ट विद देम. द प्रवासी भारतीय दिवस, राइट, OCI कार्ड्स एट्सेट्रा, दैट विल सी. द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन डायस्पोरा and what are their challenges, right, which varies across the diaspora. After this we come to important international institutions. So India has this agenda for a long time that we need reforms in the membership, in the power equation in international institutions of global governance. For example, World Bank, IMF, WHO, WTO, UN, UN Security Council, there needs to be reform. India is also demanding a permanent seat in the UN Security Council as part of the G4 grouping. तो ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे. ये important area है जहाँ से question आ सकता है reform, because this is an agenda also of India's G20 presidency, the reform in the multilateral institutions of global governance. After this we come to the important international events. तो यहाँ हम इन चीज़ों को देखेंगे, जैसे कि यूक्रेन वॉर है, उसमें इंडिया का जो स्टैंड है, where we have not openly been critical of Russia's aggression. So what is the reason behind that? We are still buying the discounted Russian oil. What is the reason behind that? We are advocating dialogue.
राइट। तो जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी वगैरह है वो सारी चीज़ों को हम देखेंगे कि वाई आवर स्टैंड इज जस्टिफाइड, and then we'll also look at some recent events like the Sudan conflict, the Yemen crisis. Okay, तो इन सारी चीज़ों को भी देखेंगे जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं तो उनको और उनके पीछे की रीज़न को. Then very important development in recent times in West Asia has been China's mediation in between Saudi Arabia and Iran. So between Saudi Arabia and Iran, because of China's efforts, there seems to be a re-engagement taking place. So that is very, very important because this shows the increasing role of China, decreasing role of United States, and how does it impact India's equations in the West Asia, because India has good relations with Saudi Arabia, India has decent relations with Iran. तो ये इंडिया को कैसे इम्पैक्ट करता है? The growing influence of China, because India has strained ties with China. इजराइल पैलेस्टीन इशू हमेशा विवाद में रहता ही है, तो इसके भी हम जेनेसिस भी देखेंगे कि कैसे इसका ओरिजिन है और अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट इसमें क्या है. राइट, तो इस तरीके से अगर और भी कुछ नए डेवलपमेंट्स होंगे इंटरनेशनल रिलेशंस पे, तो विल बी कवरिंग इट in the course of the classes. So with this, I'm sure you would have got an idea that how we will be going about these classes. So we'll be covering the India's foreign policy, important areas of India's foreign policy, India's neighborhood relations, India's important bilateral relations, then the Indian diaspora, and we'll also be looking at important international institutions and groupings. Then we'll be looking at the important international events. So that is how we'll be covering the IR syllabus for UPPCS. Now let me just take you through the UPPCS 2022 previous year's questions, and with this you will get a clear idea कि कैसे questions UPPCS पूछ रहा है. So I'll be discussing only the 2022 question paper. और इसमें हम देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन पूछा गया है, पहला क्वेश्चन, that is about energy security, and it says that energy security is the most important part of the economic progress of India. So a statement has been given which is a valid statement. Energy security very important for a growing country like India. Now it is asking us to analyze India's energy policy cooperation with West Asian countries. तो देखिए, जब हम वेस्ट एशिया डिस्कस करेंगे तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, द एनर्जी सिक्योरिटी ऑफ इंडिया. इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इम्पोर्टर, थर्ड बिगेस्ट इम्पोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल, और जो सबसे ज़्यादा सोर्सिंग जहाँ से होती है क्रूड ऑयल की, दैट इज़ द वेस्ट एशियन रीजन. राइट, इन रिसेंट टाइम्स रशिया से हम काफ़ी ले रहे हैं, बट उसके पीछे रीजन्स डिफरेंट है, बिकॉज of the Ukraine crisis and the Russian oil being available at a discount. तो ये कई सारे फैक्टर्स हैं. अदरवाइज वेस्ट एशिया हमेशा से इंडिया के लिए सबसे बड़ा सोर्स रहा है फॉर एनर्जी सिक्योरिटी. दैट इज़ वाई इंडिया इज़ वेरी मच इंगेज्ड इन वेस्ट एशिया. राइट, तो ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि जो पूछा गया था अबाउट इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी एंड हाउ वी हैव टू एनालाइज इंडियाज एनर्जी पॉलिसी कॉपरेशन विद द वेस्ट एशियन कंट्रीज. तो इसमें हम यूएई के बारे में बात कर सकते हैं, सऊदी अरेबिया के बारे में बात कर सकते हैं कि हाउ द रिलेशनशिप इज नाउ नॉट जस्ट बायर सेलर रिलेशनशिप. रिलेशनशिप हैज़ बिकम मोर इन्वॉल्व्ड, वेयर Saudi Arabia, UAE, they are also wanting to invest in India in refining, in building refining capacity. Strategic petroleum reserves, उसमें भी वो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं. राइट, तो उस तरीके की हम एग्जाम्पल्स दे सकते हैं. सेकेंड क्वेश्चन वॉज अबाउट डिस्कस द कॉजेज ऑफ रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट. डायरेक्ट क्वेश्चन है कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के पीछे क्या रीजंस रहे. राइट, तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें कि जो यूक्रेन की तरफ से रीजंस है कि इट्स ग्रोइंग प्रॉक्सिमिटी विथ द वेस्ट, राइट, विच वाज नॉट लाइक बाय रशिया. Its repeated request for NATO membership,
Then Russia's wanting to claim its dominance over the eastern part of Ukraine, right, the Donbas region. तो जो Donbas region में जो rebels थे और ethnic Russian speaking people, so for their protection, because there was the Russian claim is that they were getting persecuted by the Ukrainian army, so they had to help. तो एक civil war type situation जो eastern region में चल रही थी वो भी इसके लिए एक फैक्टर था, राइट. तो इस तरीके से हम कई सारी चीज़ों को बता सकते हैं कि जिनकी वजह से ये रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट इतना बढ़ा. देन इफ यू कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द कंटेंशियस इश्यूज between India and Nepal? Again direct question, and then we have to explain. So we'll talk about the issues relating to the open border between the two sides, right? There's the issue of Kala Pani and Susta territorial issues are there, right? And there are issues with respect to water sharing, right? Then the perception about Indian interference in Nepal's internal politics and so on, right? तो ये सारे कुछ contentious issues हैं, right? The revision of treaty of peace and friendship between India and Nepal, इन सारी चीज़ों को हम इसमें बता सकते हैं. Again a direct question has been asked. Fourth question was about what are the areas of contention and cooperation in India-US relations discuss. तो India-US important bilateral relation है, तो उसमें भी हम areas of contention भी बताएंगे, areas of cooperation भी बताएंगे. Contention में देखिए areas are basically trade related. अभी हाल ही में इंडिया के ऊपर एक और रिपोर्ट उन्होंने जो रिलीज़ की है यूएस ने, दैट इज़ अबाउट रिलीजियस फ्रीडम. तो समटाइम्स religious freedom etc. such issues are raised by US. Then we also have issues related to third countries, right? For example, the policy of US towards Iran, so that has actually complicated India's relation with Iran. तो ये भी एक problematic area है कि US के साथ friendship अच्छी तो है, लेकिन it also has its own drawbacks, right? तो कंटेंशियस इश्यूज में हम ट्रेड रिलेटेड बात करेंगे, रिलेशन विद थर्ड कंट्रीज, द रिलीजियस फ्रीडम इशू और ह्यूमन राइट्स इशू दैट आर रेज्ड बाय यूएस फ्रॉम टाइम टू टाइम. सो दैट रेजेस द स्ट्रेस इन द रिलेशनशिप. और डेफिनेटली क्लाइमेट चेंज वाले इश्यूज पे भी वी आर ऑन द अपोजिट साइड्स. तो यूएस इज़ अ डेवलप्ड कंट्री एंड वी आर अ डेवलपिंग कंट्री. हम लोग अपोजिट साइड्स में, ग्लोबल नॉर्थ वर्सेस ग्लोबल साउथ डिबेट में. और एरियाज ऑफ कॉपरेशन की बात की जाए तो डेफिनेटली वी आर कॉपरेटिंग इन एरियाज सच एज इंडो पैसिफिक, वेयर वी आर पार्ट ऑफ क्वाड ग्रुपिंग, राइट. वी आर ऑल्सो कॉपरेटिंग इन टेक्नोलॉजी एरिया, जहाँ की अभी हाल ही के कुछ डेवलपमेंट हैं, जैसे ICET है, इनिशिएटिव फॉर दिस emerging technologies, right? Critical and emerging technologies. Then we are also cooperating, or there is cooperation between ISRO and NASA. इसका एक एग्जांपल है जो निसार अभी लॉन्च हुआ है सैटेलाइट, राइट, या लॉन्च होने वाली है. तो all of this we can say about the cooperation part. Then obviously we are also coming closer because of the China factor, right, which is an issue for us, which is a bigger issue for US. तो वो भी हमें साथ में लेके आ रहा है. प्लस बोथ कंट्रीज आर डेमोक्रेसीज, वी हैव सिमिलर वर्ल्ड व्यू. इन सारी वजहों से हम लोग क्लोज आ रहे हैं. अगर फिफ्थ क्वेश्चन की बात की जाए तो इट वाज अबाउट इवेल्युएट द रोल ऑफ वर्ल्ड बैंक इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया. तो दिस वाज मोर ऑफ ए इकोनॉमी रिलेटेड क्वेश्चन आस्क्ड इन इंटरनेशनल रिलेशंस. तो यहाँ हम वर्ल्ड बैंक का रोल बता सकते हैं कि किस तरीके का रोल है इन. वी कैन गिव एग्जांपल्स ऑफ द बिग प्रोजेक्ट्स वेयर वर्ल्ड बैंक
has funded these projects, और वर्ल्ड बैंक की फंडिंग के पीछे क्या इश्यूज हैं, और उसका एक क्रिटिकल एनालिसिस वी कैन गिव कि कहाँ वो हेल्पफुल है और कहाँ वो थोड़ा चैलेंजिंग भी हो जाता है, बिकॉज इट ऑल्सो कम्स विथ कंडीशंस अटैच्ड. So this was the UPPCS 2022 paper, and we can see very direct questions, और वैसे क्वेश्चन जिस पे अगर हमने क्लासेस कर रखी है या हमने तैयारी कर रखी है, करंट डेवलपमेंट्स हमें पता है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता है, तो वी कैन राइट गुड आंसर्स एंड वी कैन स्कोर वेरी हाई. So with this I would like to invite you to become part of this UPPCS mains course of Drishti IAS, and here I will be taking your IR classes, and I look forward to meeting you in the class and taking this discussion forward. Thank you.